3, 2, 1. Let's get started. In this one, we are covering chapter number 17.3. That is nothing but the topic, that is forensic accounting. We have the Hemant Somani sir book. So chapter number 17, that is forensic accounting. Forensic accounting क्या है? That is nothing but the integration of accounting, auditing, and investigative skills that yields the specialty which is known as forensic accounting. तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ नथिंग बट द इंटीग्रेशन हो जाता है जहाँ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स का that yields a specialty which is known as forensic accounting. It is the study and interpretation of accounting evidence. It is the application of accounting methods को apply करते आप to the tracking and collection of forensic evidence, which is usually for investigation and prosecution of criminal acts such as embezzlement or fraud. तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग की जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है जो कि हमें आती है और आनी चाहिए, दैट इज़ व्हाट कि इंटीग्रेशन होता है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्किल्स दैट यील्ड्स अ स्पेशलिटी विच इज़ नोन एज फॉरेंसिक अकाउंटिंग. इसमें क्या होगा? स्टडी होगा, इंटरप्रिटेशन होगा अकाउंटिंग एविडेंस का. इट इज़ द एप्लीकेशन जहाँ आप अप्लाई करोगे अकाउंटिंग मैथड्स टू द ट्रेकिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस. इट इज़ यूजुअली फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स सच एज एम्बेजलमेंट एंड फ्रॉड. Now next, that is the book definition by this. The forensic accounting is the application. This is the alternative definition. I am not putting much emphasis on this because I know this one. So it is nothing but the integration of accounting, auditing and investigative skills that yields a specialty which is known as forensic accounting. It is the study and interpretation of accounting evidence. It is the application of accounting methods to the tracking and collection of forensic evidence which is usually for investigation and prosecution of criminal acts such as this. Okay, मूविंग फर्दर, दैट इज़ व्हाट इज़ दी फॉरेंसिक. तो जो वर्ड फॉरेंसिक है वो आया था फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉरेंसिस विच इज़ मीनिंग ऑफ और बिफोर दी forum. It is relating to use in and appropriate for court or law for public discussion and argumentation. Relating it to the use of science or technology in the investigation and establishment of fact or evidence in a court of law. Now moving further, that is what is red flag. Red flag क्या है? These are the indicators or warning. What is red flag? These are nothing but the indicators or warning of any impending danger or inappropriate behavior. Red flag does not necessarily indicate the existence of fraud. However, indicators that cautious need to be exercised while investigating the situation. Red flag are classified in categories such as financial performance. और भी है study material में, याद ध्यान नहीं है. Financial, operational, behavioral, ऐसा करके कुछ है. Okay. Now, difference. ABC Limited is a listed company and plans expansion by incurring following costs. Rupees 10 crore for building, 8.5 crore for machine, 1.5 crore for working capital. The total is 20 crore. यानी कि 10, 8.5, 18.5, 18.5 और 0.5, 19 plus 1, 20 crore. Director is suspicious transaction or notice in purchase or building material, but management is confused as to whether do an audit or forensic audit done for the same. Advice different in forensic accounting and audit. तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट प्रोफेशनल है विल ऑफन लुक फॉर इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड. जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट प्रोफेशनल है दैट विल ऑफन लुक फॉर इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू द स्कोप ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. Forensic accounting has a investigative mentality. A forensic accountant professional may focus more on seemingly immaterial transactions. However, auditing is done with professional skepticism. Forensic accounting क्या है? That has a investigative mentality. A forensic accountant has professional may focus more on seemingly immaterial transaction. Auditing is done with professional skepticism. A professional accountant professional will often require more extensive corroboration. तो अब हम आ जाते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अदर ऑडिट एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग. दैट इज़ नथिंग बट OTP वेरीफाई करके ऑफ कर देना एंड्रॉयड. ये टेक्निक दूसरी है, मैंने इसको ऑलरेडी लर्न कर रखा है, तो वी आर रिटेनिंग द सेम विद OTP वेरीफाई करके ऑफ कर देना एंड्रॉयड. O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव, T स्टैंड्स फॉर टेक्निक, P मतलब पीरियड, ऑफ मतलब ऑफ बैलेंस शीट आइटम एंड ऑफ कर देना एंड्रॉयड. वेरीफाई एंड एडवर्स findings if any.
तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, OTP दैट इज ऑब्जेक्टिव, एक्सप्रेस किया जाता है एन ओपिनियन एज टू ट्रू एंड अ फेयर प्रेजेंटेशन एंड वेदर फ्रॉड हैज एक्चुअली टेकन प्लेस इन बुक्स। तो ऑब्जेक्टिव हम क्या, हम एक्सप्रेस करेंगे एन ओपिनियन एज टू ट्रू एंड अ फेयर व्यू, फेयर प्रेजेंटेशन एंड वेदर फ्रॉड हैज एक्चुअली टेकन प्लेस इन बुक्स। टेक्निक सब्सटेंटिव एंड कंप्लायंस है सैम्पल बेसिस में इन्वेस्टिगेटिव, सब्सटेंटिव और इन डेप्थ चेकिंग हो सकती है। पीरियड नॉर्मली फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड एंड देयर इज नो सच लिमिटेशन इन दिस। उसके बाद हम बोल रहे हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज व्हाट? वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक एस्टिमेशन, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स, प्रोविजन, लाइबिलिटी। रिलाई किया जाता है ऑन मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होगा सस्पेक्टेड सेलेक्टेड आइटम वेयर मिस एप्रोप्रिएशन इज सस्पेक्टेड। ऑफ इज व्हाट? ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ऑफ बैलेंस शीट यानी कि यूज टू वाउच व्हाट विल बी द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस क्या होगा प्रोसीजर्स के साथ। रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटी ऑफ दिस ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट आर एग्जामिन। एडवर्स फाइंडिंग इफ एनी यानी कि नेगेटिव ओपिनियन और क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस विद और विदाउट क्वांटिफिकेशन। एडवर्स फाइंडिंग में क्या होता है, नेगेटिव ओपिनियन है या क्वालिफाइड ओपिनियन है विच इज एक्सप्रेस विद और विदाउट क्वांटिफिकेशन। लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रॉड, इम्पैक्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ परपीट्रेटर्स डिपेंडिंग ऑन स्कोप। उसके बाद अबाउट फॉरेंसिक ऑडिटर्स, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक तो हमें अदर ऑडिटर फॉरेंसिक में डिफरेंस पता आना चाहिए, दैट इज ओटीपी वेरीफाई यानी कि ऑब्जेक्टिव, देन टी फॉर टेक्निक, पी फॉर पीरियड, वेरिफिकेशन, देन ऑफ बैलेंस शीट आइटम एंड एडवर्स, फिर अंदर का कंटेंट हमें आना चाहिए। उसके बाद अबाउट फॉरेंसिक ऑडिटर एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग सर्विस क्या है? व्हाट आर द एरियाज वेयर द सर्विसेज ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटेंट आर जनरली रिक्वायर्ड। एन इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय फॉरेंसिक प्रोफेशनल इन दिस एरिया आर एज फॉलो। तो दैट इज़ व्हाट? FMDT IDT, FMDT IDT सारी सब्जेक्ट्स में ज़रूरत है इसकी। फॉरेंसिक अकाउंटिंग सर्विस FMDT IDT यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, फंड डाइवर्जन, एसेट ट्रेसिंग, लाइसेंस फी ड्यू, टैक्स इवेजन, suspicious transaction in IBC, insolvency and bankruptcy court, valuation estimation of loss and damage, related party transaction and valuation। तो हम क्या बोलते हैं अबाउट फॉरेंसिक ऑडिटर, फॉरेंसिक अकाउंटेंट। तो दैट इज FMIDT IBT, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन के FM, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन, मनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, फंड डाइवर्जन, एसेट ट्रेसिंग, लाइसेंस फी ड्यू, टैक्स इवेजन, सस्पेशन ट्रांजैक्शन IBC, वैल्यूएशन ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन। हु रिटेन फॉरेंसिक अकाउंटेंट, कौन रिटेन करता है? पुलिस फोर्सेस, कोर्ट, लॉयर्स, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, बिजनेस कम्युनिटी, गवर्नमेंट एजेंसी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें? एक्सपर्ट इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ, एक्सपर्ट होते हैं इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड यूजिंग कंप्यूटर। तो हम क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट इन यानी कि प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिनोमी। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फॉरेंसिक एंड व्हाई द नीड फॉर फॉरेंसिक ऑडिट अराइज, क्यों अराइज होती है? बिकॉज प्रोवाइड एक्सपर्ट टेस्टिनोमी, फ्रॉड का प्रिवेंशन करते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन करते हैं, एंड कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। तो दीज आर बेसिकली द फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वॉल्व इन। एक्सपर्ट होते हैं इन प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड यूजिंग कंप्यूटर। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फॉरेंसिक एंड व्हाई द नीड फॉर फॉरेंसिक ऑडिट अराइज। फॉरेंसिक वर्ड डेफिनेशन गिवन इन फर्स्ट पेज, तो वो लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स दैट यील्ड्स अ स्पेशलिटी एंड ऑल। फिर प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिनोमी, फ्रॉड का प्रिवेंशन, फ्रॉड का डिटेक्शन एंड कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। स्किल्स क्या होता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग? इन ऑर्डर टू प्रॉपरली परफॉर्म दिस सर्विसेज अ फॉरेंसिक अकाउंटेंट प्रोफेशनल मस्ट बी familiar with legal concept and procedure and have expertise in the use of IT tools and technique that facilitate data recovery and analysis. In addition, a forensic accountant professional must be able to identify substance over form when dealing with an issue. X Limited manufacturer has taken a periodic liability insurance policy cover risk of liabilities for damage for bodily injury resulting from sale and distribution of floor. The policy is also subject to claim series close. A claim series event is a series of two or more claims arising from one specific common cause which are attributable to the same fault in design and manufacture of product or to the supply of same product showing the same defect. Forensic accountant appointed by the insurance company. What special issues you would keep in mind while dealing with claims involving PLI policy covering such matters?
तो ट्रैक 3 पार्टी से कितने रुपीज़ की लीगल लाइबिलिटी एंड कब आई? ओहो, ये तो बहुत बड़ा लॉस है, रेपुटेशन इशू होगा, अपना इंडिपेंडेंस रखना है. इन क्लेम्स involving product liability insurance policy, many documents are required from third parties. The third party may be unwilling to provide relevant documents to forensic accountant concerning the very organization responsible for causing damages. Quantification of legal liability under the policy can prove to be challenging task, and it has to be determined in accordance with policy terms and conditions. Careful analysis होगी date of loss when first claim occurred in accordance with claim series close and whether the same falls under this policy. Company might be willing to negotiate it to salvage its reputation. It can lead to additional complexity. Independence of forensic accountant become paramount in such type of assignment because it involves engagement with party who are not directly claiming from insurance company. Forensic accountant need to resist any pressure or interference in establishing the scope of assignment or the manner in which the work is conducted and reported. What will be the process of forensic accounting? क्या होगा process? तो enumerate what are the steps to be undertaken in case of forensic accounting process. Initialization. Clarify कीजिए सारे doubt as to the real motive क्या है, purpose क्या है, utility क्या है, assignment की. Develop the plan. Plan will take into account the knowledge gained by meeting. Obtain कीजिए relevant evidence. In order to gather detailed evidence, the investigator must understand what is the specific type of fraud that has been carried out and how the fraud has been committed. Evidence should be sufficient to prove identity of fraudsters, mechanism, method of fraud, amount of financial loss incurred. Investigating team is skilled in collecting evidence that can be used in court case within the stipulated time period and keeping a clear chain of custody until the evidence is presented in court. If any evidence is inconclusive or there are gaps in the chain of custody, then the evidence may be challenged in court or even become inadmissible. Perform analysis. You have been appointed as a forensic accountant and specify the various analysis which might be carried out by you to arrive at your result. Calculate कीजिए economic damages. Summarize कीजिए large number of transaction. Statistics related point क्या होता है? What will be the statistics related point? परफॉर्म कीजिए प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन. यूटिलाइज कीजिए अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट्स. परफॉर्म कीजिए और रिग्रेशन और सेंसिटिविटी एनालिसिस. यूटिलाइज कीजिए चार्ट्स एंड ग्राफ्स टू एक्सप्लेन द एनालिसिस. यूटिलाइज अ कंप्यूटराइज एप्लीकेशन सच एज स्प्रेडशीट, डेटाबेस और कंप्यूटर्स मॉडल परफॉर्मिंग अ ट्रेसिंग ऑफ असेट्स. Issue कीजिए an audit report is a final step of a fraud audit. Auditors will include information detailing the fraudulent activity, finding of investigation evidence and conclusion, amount of loss suffered and identify to those involved in fraud. May include nature of assignment, scope, approach, limitation, finding, opinion. Report will include schedule and graphic necessary to proper support and explain findings. उसके बाद भी है, तो उसके बाद भी सर की बुक में तो इतना ही है. रिपोर्ट जो है विल ऑल्सो डिस्कस करेगी कैसे फ्रॉडस्टर सेटअप करता है द फ्रॉड स्कीम एंड विच कंट्रोल इफ एनी वर सर्कमवेंटेड. इट ऑल्सो लाइकली दैट इन्वेस्टिगेटिव टीम will recommend improvements. Court proceedings के the investigation is likely to lead to legal proceeding against the suspect and members of investigative team will probably be involved in any resultant court case. Team member may be called to court to describe the evidence they have gathered. Forensic accountant extracted evidence but team failed, keeping record of each person in team gathering relevant evidence, date and time of collection and storage of such evidence. In forensic engagement, undertake scrutiny and detailed examination of all relevant transactions so that evidence gathered is suitable in court of law. कंपनी का लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? वेर इट कैन बी चैलेंज बाय डिफेंडिंग पार्टी. टीम शुड बी स्किल इन कलेक्टिंग एविडेंस, कीपिंग क्लियर चेन ऑफ कस्टडी ऑफ एविडेंस. इफ एनी गैप इन चेंज एविडेंस कैन बी चैलेंज इन कोर्ट even when become inadmissible by defending party. Hence, explain given case it defeat objective of forensic accounting evidence can be challenged in a court of law. Forensic accounting and investigation report. Forensic accounting and investigation report क्या होता है? This forensic accounting and investigation standards 510 deals with the responsibility of the professional to issue a written report to the stakeholders of the conclusion of assignment. Reporting results of a work procedure completed and findings from those procedures is the concluding part of assignment.
Since one engagement may include multiple assignment, multiple report may have to be issued one for each assignment. Briefly discuss कीजिए what are the content of forensic accounting and investigation report. There is no trick. See the answer. It is very basic about the audit report. Timely basis पे written किया है क्या content, like assumption, final से पहले draft share करो. Written report. Written report conveys the result of assignment clearly and accurately, precise and unambiguous. Report addresses and distribution shall be addressed to the primary stakeholders and shared with other stakeholders if required or otherwise permissible. Format and content क्या होगा? No fixed form or content of the report is mandated by this standard. Where the form and the content of report is mandated by the stakeholder or specified by statutory or regulatory requirement, the professional shall report in line with those requirements while keeping in mind the key element. Key element of report, the professional shall consider what will be the inclusion of key element in the report, title, addressee and distribution list. स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा? असाइनमेंट का अप्रोच एंड ब्रॉड वर्क प्रोसीजर्स क्या होगा? एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द रिजल्ट कवरिंग दी ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड द एसेंस ऑफ फाइंडिंग. Reference to use of an expert where applicable. The fact that the assignment has conducted in accordance with this. The fact that the assignment has conducted in accordance with this list of findings supported by key evidence, sources of evidence and other relevant matter. Assumption, limitation and disclaimer of assignment, conclusion if any drawn from the assignment undertaken. Then उसके बाद हमारा आता है that discussion of draft audit draft report कैसे करोगे? Mandate of the engagement requires a discussion of finding with the subject party prior to finalization. A summary of responses received from shall be included in the report. Further, principle of natural justice requires a discussion of observation with subject party. Assumption and limitation list any relevant assumption significant bearing क्या है on the subject matter. Professional may encounter limitation that restrict the methodology and procedure, lack of or limited management support, restricted or denied access to required records. The report shall not express an opinion or pass any judgment on the guilt or innocence. Determination of culpability is either a disciplinary process internal to the organization under review or judicial process. Then आता है हमारा what will be the reporting timeliness shall be issued within reasonable time frame as per the engagement term. The professional may be required to provide interim report as per the engagement terms, which can be given to the extent practicable without compromising the progress of investigation. Such interim report are also subject to these standards. How there will be the overview of forensic accounting and investigation standards. Framework governing forensic accounting and investigation framework lays down the underlying principle and boundaries for undertaking such a service. This framework need to be read in conjunction with the preface of this. What will be the objective क्या होगा? Framework provide a overall understanding of forensic accounting and investigations and its key component. Outline what will be the manner in which these components come together in interrelated cohesive manner when providing such services. Maintain and improve the quality of forensic accounting and investigation services. So what will be the mandatory क्या होगा? Components given are mandatory except guidance note is recommendatory. Key component, the four key components forming the pillars of framework are basic principle of forensic accounting and investigation. Key concept is standards of forensic accounting and guidance. Code of ethics forms the foundation of framework. FAIS seek to provide forensic accounting and investigation standards, seek to provide the professional with minimum standard for undertaking forensic accounting and investigation assignment. The user of this with an indication the quality of service that can be expected from such engagement. The regulators and government agency with an appreciation of what can be expected from these services. To everyone guidance on a matter of implementation and related practical issues. Principle, the standards are intended to the principle based rather than rule based, thereby providing ample room for professional judgment when applying such a principle to unique situation under specific circumstances. अगर अनएबल है टू कंप्लाई विद दिस फॉरेंसिक अकाउंटिंग और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, इफ़ फॉर एनी रीजन अ मेंबर इज अनएबल टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस और देयर इज अ conflict between the standards and other mandates such as statutory or regulatory requirement, report or similar communication shall draw attention to the material departure therefrom along with the appropriate explanation.
तो विद दिस इतना ही है सर की बुक